Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where vector a is this and vector b is this. तो पहले a plus b और a minus b इन दोनों vectors को हम compute कर लेते हैं. Vector a plus b will give you 3 plus 1 is 4, I hat 2 plus 2 is again 4, j hat this time 2 plus negative 2 is just 0, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. Let's write vector a minus vector b. So 3 minus 1 is gonna give you 2i hat, 2j minus 2j is going to give you 0, no need to write it again, and 2k minus negative 2k will give you positive 4k hat. Now we have to find a unit vector that is perpendicular to both of these. तो अगर आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स अगर let's say c और d दिए हुए हैं, अगर आपको एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो इसके परपेंडिकुलर हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, that will be the cross product of vector c and d. So same we will employ the same technique here. Vector a plus vector b बार बार लिखना थोड़ा सा cumbersome हो जाएगा, so let's just take this to be equal to small c, let's take this to be equal to small d. Now small c cross small d is equal to, अब हम वही determinant वाले रूल से इसको फिगर आउट कर लेंगे. सो लेट्स जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द कंपोनेंट्स. वेक्टर सी में आपके पास होगा 4 4 0 एंड वेक्टर डी में आपके पास हो जाएगा 2, जे का कोई कंपोनेंट नहीं है, सो दैट विल बी 0 एंड देन फॉर के यू विल हैव 4. नाउ लेट्स जस्ट राइट आउट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी. तो पहले आई कंपोनेंट हम लिखते हैं. आई कंपोनेंट विल बी 4 times 4 minus 0 times 0, so that will just be 16. Then j component में हमारे पास हो जाएगा, firstly we will have a negative j, so let me just write that, and here we will have 4 cross 4 minus 2 cross 0, so that will be just 16. And then we will finally move on to the k component. k component में हमारे पास हो जाएगा 4 times 0, which is just 0, minus 4 times 2, which is negative 8. Now you can just solve this. This will give you 16 I hat minus 16 j hat minus 8 k hat. Now we are asked to find a unit vector. तो हम इस direction में एक unit vector हमें निकालना है. That will just be equal to this entire vector divided by its magnitude. ऐसे ही हम unit vector को calculate करते हैं. So 16i hat minus 16j hat minus 8k hat divided by the square root of 16 square plus negative 16 square plus negative 8 square. This is equal to 16i hat minus 16j hat minus 8k hat divided by 8 times the square root of 4 plus 4 plus 1, or this is just equal to 3. This is square root of 9 equal to 3. So you will have 2 over 3 I hat minus 2 over 3 j hat minus 1 over 3 k hat. This is going to be the unit vector that was asked in the question.